Today on 27th of March. Serial lecture number 5 of the day. We all are here for subject physics. Yesterday we started the new chapter. We will continue the discussion considering the contents of the same. So we will start to discuss about the contents from chapter 12, magnetism. Yesterday we studied few properties of each and every magnet. So the question can be said, write any four properties of the magnet. Such questions are not given in the exercise. चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चंस कुछ दिए नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में फॉर 1 मार्क आ सकते हैं VSA टाइप. Or define the following terms like magnetic length, geometric length, magnetic pole, magnetic dipole moment, magnetic axis, magnetic equator, etc. Define all of them. State SI units of the quantities. ऐसे क्वेश्चन VSA के लिए आ सकते हैं which are not at all included in the exercise of the chapter. But be ready with these questions also. Because such questions may arrive in the question paper. So I will launch today the question bank. Additional questions not included in the exercise but can be asked in the exam. So prepare that question bank also for this chapter. So yesterday we were interlinking electricity with magnetism. So analogy between the two, because both are interrelated with each other. You can have few concepts analogous in both these branches. We have electric dipole with plus Q minus Q isolated from each other. Similarly, in magnetism, we have magnetic dipole. It is the simplest structure in magnetism, having two poles equal strength, opposite polarities, opposite in nature, and separated from each other through certain finite distance, which we call as magnetic length. So, pole strength of N pole is treated positive. For S pole, it is treated negative. In the book, they have given pole strength by letter Q suffix M. So, this will be minus Q times M. So, this is the analogy. So, taking the analogy between these two, you can directly write expressions for strength of magnetic field produced by the bar magnet. Bar magnet is the simplest structure. So for practical purposes, this simplest structure is used. And with the analogy, you can find strength of magnetic field at axial point at distance r from the center of a magnet. Strength of magnetic field produced by bar magnet at any equatorial point at distance r from its center. By taking analogy, by knowing the values of electric field intensity at axial point, at equatorial point due to electric dipole, with the analogy, you can express the values of strength of magnetic field developed at axial point and equatorial point. You just remind the values of intensity at axial point due to electric dipole. Are you finding it? On page 203, when we studied chapter electrostatics, we found this relation, and that relation is equation number 10.23 on page 203. आपका बुक का पेज निकालो 203.
And look at equation 10.23. We already have derived this equation for electric dipole. We'll remind that equation and we'll analogy, we write equation for magnetic field instead of electric field. So from equation 10.33, electric field intensity at axial point at distance r from the center of electric dipole, are you remembering? 1 upon 4 pi epsilon naught. If the dipole is kept in air, value of k will be 1. Whiteboard is not clear. Okay, I will try. Now it is more focused. So it is 2pr divided by r square minus L square bracket square. So if electric dipole is not short, general expression for electric field intensity at axial point at distance r from the center of electric dipole is 1 upon 4 pi epsilon naught 2pr upon r square minus L square entire bracket square. With the same analogy, you can write expression for magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. सो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय इंडक्शन. ये इंडक्शन वर्ड है, उसका सिंबल है बी. सो मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी एक्सियल पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट then will be this constant you have to replace. In magnetism, the value of this constant comes mu naught upon 4 pi. इलेक्ट्रिसिटी में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, उसके अलावा मैग्नेटिज्म में उसकी वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई इतनी आती है. सो यू कैन रिप्लेस दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P by magnetic dipole moment small m. So that will be 2. P will be replaced by m. R you are selecting the same symbol, the distance of axial point from the center of magnet. So R will not change upon R square minus L square bracket raised to square. With the analogy, replacing just the constant, you can find B at axial point due to magnetic dipole. If the dipole is short, short means what? R is very large as compared to L, then what will happen? It will reduce to L square will go away, square raised to 4, R upon R raised to 4 will be 1 upon R cube. So 2m divided by R cube, where m is magnetic dipole moment associated with the given magnet. So these two expressions are very important. With analogy, directly you can state the value of magnetic field strength at axial point with the equation stated like this: mu naught by 4 pi 2 mr upon r square minus L square bracket square. This is the value. Similarly, what will be its direction? Electric field जो डायपोल लिया था ना हम लोगों ने, तो डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट was from negative charge to positive charge. So what will be direction of this magnetic dipole moment? From negative pole strength to positive pole strength. So through the magnet, magnetic dipole moment is directed from S pole to N pole. And axis, along the axis, the field produced will be in the direction of magnetic dipole moment. क्योंकि जब भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूज किया था तभी हम लोगों ने क्या किया था, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. सिमिलरली हियर यू कैन से बी एक्सियल इज ऑलवेज डायरेक्टेड at this point, suppose will be from S pole to N pole in the direction of magnetic dipole moment. If point lies to its left,
Still, direction will not change. It should point from S pole to N pole, that is towards the magnet. For right hand side point, it will be away from the magnet. But direction never changes. At any axial point, it should direct from S pole to N pole in the direction of magnetic dipole moment. So this is the analogy between electricity and magnetism. Using the same, we can write expression for equatorial point. If this magnet produces magnetic field in its surrounding region, if you select any equatorial point at distance r from the center of magnet, you can write its expression taking analogy with electrostatics, electric dipole moment. वो मैंने देखा है. For electric dipole moment at any equatorial point, जो वैल्यू हमने निकाली थी ना, इट इज ऑन पेज नंबर 203. जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हम लोग डील कर रहे थे, तो ये सब एक्सप्रेशंस हम लोगों ने फाइंड आउट की है, कैलकुलेटेड है. तो ये लास्ट एक्सप्रेशन है ना 203 पेज पे, राइट साइड पे लास्ट वैल्यू, दैट विल बी 1/4πε0 P divided by r square plus l square raised to 3/2. ये जनरल इक्वेशन है फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट. Similarly, for magnetic field, what we'll write? 1/4πε0 replaced by μ0/4π. Electric dipole moment will replace by magnetic dipole moment m. The rest will remain same, r square plus l square raised to 3/2. So this is expression for magnetic field strength at equatorial point at distance r from its center, and L is half its magnetic length. So directly you can state these equations because there is interrelation between electricity magnetism, and you take analogy between the two. No need to derive again separately. Using these two, we will proceed further to find value of magnetic field at any general point. Suppose this is magnet. You will take any general point, suppose P. Let its distance from center of magnet be r. ये distance हम लोग r ले लेंगे, isn't it? This is suppose n pole है, ये s pole है. What we will do? You want to find value of field developed in strength as well as in direction, because magnetic field is a vector quantity. So you have to express B in both, in direction as well as with its strength. What we will do? This is small m, magnetic dipole moment. What we will do? We'll resolve this m. Let the direction of this OP line, segment OP with length of the magnet b theta, ये हम लोग एंगल थीटा ले लेंगे. और what we will assume? We'll resolve this m into components. One, in such a way, this P point will be axial point for this magnet 1, and the other component of M will resolve such that for this magnet 2, it will be equatorial point. Means what? We will assume instead of one magnet, the field developed at point P is the effect of two fields simultaneously developed by magnet 1 and magnet 2. A system of 1 and 2 is resultant given magnet. हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक मैग्नेट के अलावा मैंने दो मैग्नेट्स इस्तेमाल किए हैं दिस सिस्टम, एंड इसका इफेक्ट जो पी पॉइंट पे तैयार हो रहा है, द सेम इफेक्ट दिस सिंगल रिजल्ट नेट मैग्नेट इज प्रोड्यूसिंग. So instead of using single magnet, we assume the field developed at P is the net sum of fields produced by these two separate magnets 1 and 2. For magnet 1, then resolution, M का resolution करते हैं
तो फॉर मैग्नेट में व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये थीटा है ना, तो थीटा के बाजू में जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, cos थीटा. सो फॉर मैग्नेट वन for which the point lies on axis, we assume dipole moment as m cos theta. And for magnet 2, for which this point is equatorial, that उसका परपेंडिकुलर, ये जो cos है उसका परपेंडिकुलर अदर कंपोनेंट आप लोग क्या लेते हैं, साइन लेते हैं, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी m नहीं रहा, उसका क्या हो जाएगा, m sin थीटा हो जाएगा. So combination of these two magnets produces the same effect at P if both are replaced by a single magnet of poles magnetic dipole moment m. ऐसा हम लोग assume करेंगे and then we'll proceed further to find. I have started the expression on page 224. 224 पेज निकालो. वो 224 पेज में ऑब्जर्व द डायग्राम 12.3. 12.3 दिख रही है सब लोगों को, उसमें देखो, ओपन द पेज. आई हैव आस्क यू टू ओपन पेज नंबर 224. उसमें डायग्राम दी हुई है. देखो, एक मैग्नेट है, उसके लिए वो एक्सियल हो जाता है, दूसरे मैग्नेट के लिए वो पॉइंट इक्वेटोरियल होता है. फॉर एक्सियल द डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट वन विल बी m cos theta. For the magnet for which P point lies on its equator, the dipole moment you have to consider m sin theta. Accordingly, substitute these values in expression. कौन से expression दिए थे हम लोगों ने? Assume that these magnets are short magnets. ये magnets जो है short assume करते हैं, तो क्या हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. एक्सिस के लिए 2 times dipole moment आती है, लेकिन डायपोल मोमेंट m नहीं लिखना है अभी. वो क्या हो जाएगा, फॉर मैग्नेट वन हैविंग m cos theta डायपोल मोमेंट, दैट पॉइंट लाइज ऑन इट्स एक्सिस. सो दिस एक्सियल के लिए हम लोग m cos theta यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय r क्यूब. अब शॉर्ट एज्यूम किया तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. इक्वेटर के लिए वो अभी जो ले लिए है हम लोगों ने, दिस is considered to be made up of two magnets. सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट, इट विल बी फ्रॉम s पोल टू n पोल अगेन. ओनली cos विल बी रिप्लेस बाय sin एंड डिवाइडेड बाय इधर क्या आ जाएगा, r क्यूब. अकॉर्डिंगली यू आर गेटिंग इक्वेशंस 12.6 एंड 12.7. आर यू गेटिंग फ्रॉम द बुक? बुक निकालो, बुक में सब दिया हुआ है मेरे साथ, वो बुक में भी थोड़ा थोड़ा देख लो. I have unmuted each and everyone. Everyone can raise the hand and can have dialogue with me. I am trying this also. So what will happen then? अभी डायरेक्शन के बारे में देख लो. अभी दो इक्वेशंस तो मिल गए. अभी ये मेन मैग्नेट है, उसके दो मैग्नेट्स हम लोगों ने बनाए हैं, ये वाला और जो पहला है उसको परपेंडिकुलर सेकंड वाला बनाया है. Both are producing field at point P. For first magnet it is axial and for second magnet the P point is at equator. The axial में क्या होता है, along the axis away from. So this will be direction for field produced by first magnet. आणि इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है, अपोजिट टू डायरेक्शन, पैरेलल टू दिस एक्सिस. हम लोगों ने देखा है ये, लेकिन अपोजिट. तो अभी ये B1 हुआ और ये क्या हुआ, B इक्वेटोरियल हुआ. सो व्हाट विल बी देयर इफेक्टिव, आई विल ड्रॉ इट लाइक क्वाइट बिगर. दिस मैग्नेट P point axial, so direction will be along the axis and away from the magnet. For the other magnet, for which this P lies on its equator, direction will be parallel to magnetic axis. इक्वेटोरियल जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिया था वैसा ही इधर करना है, but it is opposite to dipole moment. That is from not S to N but should be from N to S. So this will be B equator.
and this will be B axial. So these two fields simultaneously act. So you can find its resultant by using law of parallelogram. So this will be its resultant. So at point P, the field produced by a single magnet or by the combination of two magnets will be along B, neither along B axis not along B equatorial. ये ध्यान रखना है. तो B की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. व्हाट विल बी B? अभी ये देखो, ये क्या हो गया, दोनों परपेंडिकुलर है. सो दिस इज हाइपोटेन्यूस. So if you consider Pythagoras, what will be its value? Square root of addition of square of these two sides, B axial square plus B equatorial square. Look in the book. Book में भी देखो, at point P BA square plus B equatorial square हो जाएगा. When you solve it, the last expression will be इधर 2 cos थीटा का स्क्वायर होगा. सो दैट विल बी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर. सो 4 का एक cos स्क्वायर इधर लिया तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाता है 1. तो व्हाट विल बी लेफ्ट? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये m हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो स्क्वायर रूट में क्या रह गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. So this will be the magnitude of magnetic field produced at general point making angle theta with the direction of axis of magnetic dipole or bar magnet. What will be its direction? If this angle is alpha, then you can find tan alpha. So tan alpha will be then B equatorial, opposite side. ये जो हम लोगों ने पूरा किया तो ये साइड और ये साइड कैसी हो गई सेम. So if this angle is theta, tan will be opposite upon adjacent. That is B equator upon B what? Axial. वही दिया है देखो 12.9, equation 12.9 देखो. In that they have given the same. So that will be tan alpha will be B equator upon B axial. So this is all about the expression for magnetic field produced by bar magnet, short bar magnet. We are not using the general expression. Special case ली है हम लोगों ने. तो you will get equation 12.9 and 12.8. 12.8 gives you the magnitude and 12.9 gives you the direction. So which completes the bar magnet. So if any query, you can ask me directly. Otherwise, I am solving few questions from exercise for 5 minutes. Any query? अरे मैंने सब लोगों को अनम्यूट किया है. Everyone can have dialogue with me. You can share your dialogue with me. खुद को अनम्यूट करो और मेरे से बातें करो. Any chatting? No chatting at all. Why? I am asking you to share your thoughts with me. Still you are not replying me. खुद को अनम्यूट करो ना और मुझसे बातें करो. मैंने सबको अनम्यूट किया है. You are not getting or what? देखती हूँ मैं एक बार वापिस. Hello. Hello. Hello now. Hello students. Hello students. No sharing at all by your side. I don't know why. We'll proceed further to solve few questions from exercise. Open page number 227. 227 open करो. उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन नंबर 1, उसका पहला ऑप्शन देखो. लेट आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट. एक पॉइंट है बार मैग्नेट के एक्सिस पे लाई डाउन है एंड इट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर. ऐसा उन लोगों ने दिया है. द मैग्नेटिक फील्ड एट r
तो जो आर में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, व्हाट इज जनरल एक्सप्रेशन वी डिराइव्ड, बी एट एक्सियल पॉइंट कौन सा लिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने ढूंढ निकाला है। और इन दिस एक्सप्रेशन उनने दिया है क्या कि ये जो मैग्नेट है वो शॉर्ट बार मैग्नेट टाइप है, नहीं दिया है। तो यू शुड नॉट गो फॉर एक्सप्रेशन 2m अपॉन आर क्यूब, ये रिड्यूस फॉर्म नहीं यूज करना है, बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन द मैग्नेट इज शॉर्ट बार मैग्नेट। सो यू शुड प्रीफर दिस जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में क्या होता है, देखो आर स्क्वायर की टर्म है, ऊपर आर की टर्म है। व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन, it is always proportional to means direct proportional to, so if you find b axial proportional to, क्या है proportional to, r ऊपर है तो ये ऑप्शन में नहीं दिया है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर बोला है उन लोगों ने। अभी आर स्क्वायर की टर्म छुट्टी है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, डोंट गो फॉर दिस ऑप्शन। The other option they have given 1 upon r cube. If it would be a short bar magnet, this r will go and in denominator we will get r cube. But short magnet नहीं है तो r cube directly you can use नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। So 1 upon r cube के लिए भी वो बराबर नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज 1 upon r, r का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आता है। You have to consider general expression m r divided by r square minus l square bracket square। तो r square वाली टर्म छुट्टी नहीं है, r cube वाली खुली नहीं है, r वाली भी नहीं है, तो what will be the option, not necessarily at all points it is proportional to 1 upon r cube। If it would be a short bar magnet, then option B would be the correct answer, because directly आप लोगों को r cube टर्म मिलती है, अभी इधर नहीं मिल रही है। तो लास्ट आंसर which is for, if the point is, if the magnet is short, not short magnet, then this also option will be incorrect। So for each and every point it is not true, it is true for each and every point if they have stated the magnet is short magnet। So first three options are incorrect, the correct answer is answer number 4, D option बराबर है। उसका फोर्थ न्यूमरिक देखो, फोर्थ न्यूमरिक आई एम आस्किंग यू टू लुक एट फोर्थ न्यूमरिक। Inside a bar magnet field lines are, क्या होता है बार मैग्नेट में, n, what I have told, the field is pointed from S pole to N pole। outside what will happen, they will be closed loops, they will originate from N and they will end into S। but inside the magnet always magnetic direction is pointed from S pole to N pole। so for 4 the correct option is D। turn over the page, 228 पेज पे फोर्थ ऑप्शन है, दे आर इन द डायरेक्शन फ्रॉम एस पोल टू एन पोल, इट इज द करेक्ट आंसर। देन विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, उसका पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल हैपन इफ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेस ट्रांसवर्स एंड अलोंग इट्स लेंथ। देखो अभी ये बार मैग्नेट है, वो 2 पीसेस में हम लोगों को कट करना है। assume ns, let the pole strength be plus m and the other will be minus, but in magnitude both will be the same। once you have to cut it along the length in 2 equal parts। उन लोगों ने दिया है जब भी कटिंग करेंगे along the length कट करना है और 2 equal parts तैयार होने चाहिए। तो one will be this one and the other will be this one। so what will happen, the length is not changing। for original magnet, magnetic length is 2L, for new pieces also for each piece magnetic length is 2L, but when it's broken lengthwise then this dipole pole strength becomes half।
ये सब पोल्स की स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है. पोल स्ट्रेंथ गेट्स अफेक्ट when the magnet is cut along the length. So what will happen for this piece? If you find magnetic dipole moment, pole strength into magnetic length, that will be ml. इसकी ओरिजिनल क्या है? m into 2l है. अभी कितनी हो गई? ml हो गई. So each piece will have the dipole moment half the value of original magnet. So this is magnet, but its dipole moment will get reduced to half due to change in pole strength of each pole. So what is the correct answer? If cut lengthwise, each new piece will have magnetic dipole moment half the original dipole moment of original magnet. The magnet can also be cut transversely. ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर, तो लेन को भी परपेंडिकुलर कट करना है. सो यू विल गेट टू पीसेस. अभी सबकी थिकनेस सेम रहेगी. सो पोल स्ट्रेंथ चेंज होने का कुछ सवाल ही नहीं आता है. इफ पोल स्ट्रेंथ हियर इज m, हियर आल्सो इट विल रिमेन m. बट व्हाट हैपेंस? द मैग्नेटिक लेंथ gets half. For this piece, it will become L because distance from S pole to point O will be now magnetic length for first piece. Distance from O to N pole will be magnetic length for this second piece. So here magnetic length reduces. It becomes L by 2 for both the pieces. So even M does not change. Length becomes half. सो 2l हम लोग लेते हैं ना, तो अभी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी. सो दैट इफ यू कंपेयर विथ ओरिजिनल m which is 2 ml, again this m of each piece will become half. So when you either cut the magnet transversely along with respect to length or parallel in the direction of length for new piece, in each case magnetic dipole moment will reduce to half in comparison with the original piece. So this is the answer. So such small questions. One more question we will solve on Tuesday. उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 क्वेश्चन में नंबर 3 है, हाँ, वो हम लोग ट्यूसडे में सॉल्व करेंगे. एंड देन विल प्रोसीड फर्दर फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म. अरे मैंने बोला अनम्यूट करके खुद बातें करो, तो नहीं करते आप लोग. I was trying to unmute. I have unmuted everyone, but no one is interested to have dialogue live with me. I don't know why. Anyway, have a good day. I am closing the meeting because we have taken 5 minutes extra. So be ready with numerics on. हाँ, hello, बोलो. Continue. क्या रे? एग्जाम के लिए ना. हाँ, योर एग्जाम तो 25 मार्क्स के है ना. तो पेपर 1 के जो चैप्टर्स है उसमें 2-3 रहेंगे, और पेपर 2 जो मैं अप्लाइड सिखा रही हूँ ना, तो उसमें खाली हम लोग रे ऑप्टिक्स रखे तो भी चलता है. हम लोगों ने कितना कवर किया है? रे ऑप्टिक्स लिया है, बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी लिया है, ईएम वेव्स लिया ना, और नाउ वी हैव स्विच ओवर फॉर मैग्नेटिज्म, द लास्ट चैप्टर व्हिच इज लेफ्ट. तो हम लोग क्या करते हैं, पेपर 2 में से खाली एक चैप्टर रखा ना, लेकिन वो ठीक से करना है. इट इज वेरी लेंदी. रे ऑप्टिक्स चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 9 बहुत बड़ा है ना, 30 पेजेस का है. और पेपर 1 पेपर 2 के चैप्टर्स के मिला के हम लोगों को 25 मार्क्स का पेपर डिराइव करना है. बराबर है? तो हम लोग ज्यादा सिलेबस नहीं रखेंगे. हाँ, व्हाट इज योर सजेशन फ्रॉम योर साइड? टेल मी. कैन यू कीप 2 चैप्टर्स फ्रॉम सेक्शन 2? क्या एक ही खाली है? आपकी क्या राय है? बोलो ना बेटो. कोई बोलता ही नहीं रे. बोलो, बोलते इधर. अरे फिजिक्स हर सब्जेक्ट के लिए एक ही पेपर रहेगा ना. हर सब्जेक्ट के लिए एक पेपर. एंड फॉर ईच सब्जेक्ट आई थिंक द टोटल मार्क्स फॉर क्वेश्चन पेपर इज 25. बराबर ना? हाँ.
तो हाँ, मेरे को लगता है इफ यू हैव ओनली वन लेसन फॉर अप्लाइड फिजिक्स, नॉट, आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट थियोरेटिकल फिजिक्स। हाँ, बोलो ना, बोलो मेरे को कुछ। हाँ, अरे पेपर शायद ना 5 अप्रैल से चालू हो जाएंगे, शायद। हाँ, अभी वो नया कुछ रूल आएगा ना लॉकडाउन का वगैरह, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन एग्जाम लेने वाले हैं, यानी कि अपने अपने ग्रुप्स है ना, उसके ऊपर हर एक सब्जेक्ट का पेपर हम लोग पीडीएफ फाइल में रजिस्टर कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, एंड यू प्रैक्टिस सॉल्विंग इट एट होम। ऐसा करेंगे हम लोग। आप लोगों को फिजिकली कॉलेज में आना नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू विजिट द कॉलेज कैंपस, इजंट इट? क्योंकि कोरोना अभी बहुत बड़ा है ना, तो अभी वो लोगों ने 4 अप्रैल तक तो मार्जिन आगे रखी है, बट स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग नॉट टू अटेंड द स्टूडेंट्स फॉर द कॉलेज एंड ऑल। द रूल्स हैव नॉट येट चेंज। सो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल पोस्ट कर देंगे, और आप लोग जैसे एग्जाम में बैठते हैं ना वैसे घर पे बैठो, खुद डिसिप्लिन मेंटेन करो, और वो पेपर विदाउट ऑप्शन लिखने की प्रैक्टिस करो, or when the college will reopen you submit that hard copy to us when you enter the college campus। जब भी आप लोग कॉलेज में आएंगे ना, तभी हम लोग उसका ये कर लेंगे ना, सबमिशन कर ले। समझा? ओके ओके। हाँ, बाय बाय। हैव अ गुड डे। अरे, हाँ हाँ, ओके, विल मीट ऑन ट्यूसडे देन। बाय, विल मीट ऑन ट्यूसडे।